Welcome to the current affairs of 17th April 2026. Which Myanmar political figure had her sentence reduced by 1/6 by the country's ruling authorities? म्यांमार में किस सियासी रहनुमा की सज़ा में एक चट्टा हिस्सा कमी की गई? आंग सान सू की, जो कि 27 साल प्रिजन की सज़ा काट रही थी, अभी इसको 1/6 किया गया है. What proposal did India drop after pushback regarding smartphones and the biometric national identification app? भारत ने स्मार्टफोन्स पर बायोमेट्रिक कौमी शनाख्ती ऐप से मुतालिक कौन सी तजवीज़ वापस ली? मैंडेटरी इंस्टॉलेशन, यानी पहले ये तजवीज़ थी कि इसको लाजमी तनसीब किया जाएगा हर एक मोबाइल फ़ोन में, और जो मोबाइल फ़ोन इंडिया में बिकेंगे उसमें ये बिल्ट इन होगा. Which strategic waterway did Iran say remained open for commercial vessels after the Lebanon deal? ईरान ने लेबनान मुआहिदे के बाद किस आबी गुजरगाह को तिजारती जहाज़ों के लिए खुला करार दिया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. Which T20 World Cup match involving Canada came after ICC scrutiny after corruption allegations surfaced? बदउनवानी इल्ज़ामात के बाद कनाडा की कौन सी T20 वर्ल्ड कप मैच ICC की जांच में आई? न्यूजीलैंड, यानी T20 का जो गेम कनाडा ने न्यूजीलैंड के साथ खेला था, तो दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर करप्शन. Which controversy reignited as UK Prime Minister Keir Starmer faced calls to resign from critics? बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के इस्तीफ़े के मुतालिबात के दौरान कौन सा तनाज़ा दोबारा भड़का? मेंडलसन रो. केयर स्टारमर ने मेंडलसन को अपॉइंट किया था एज एम्बेसडर ऑफ द यूके टू द यूनाइटेड स्टेट्स. हाउएवर लेटर ये इमर्ज हुआ कि उसकी जो सिक्योरिटी वेटिंग है वो फेल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ऑफिशियल्स ने इस फेलर को ओवररूल किया और उसको अपॉइंट किया. How much did the government reduce the diesel price by in the latest fuel price revision? हालिया ईंधन कीमत नज़रसानी में हुकूमत ने डीजल की कीमत में कितनी कमी की? ₹32. What amount did Pakistan raise through a euro bond after a 4-year gap in external borrowing? पाकिस्तान ने बैरूनी कर्जगीरी में 4 साल के वक्फे के बाद यूरो बॉन्ड के ज़रिए कितनी रकम हासिल की? $500 million. Which administration denied claims that transport terminals had been shut and said services remained operational? कौन सी इंतज़ामिया ने ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स की बंदिश के दावे रद्द करते हुए खिदमात को फ़ाल करार दिया? इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन. Which court upheld the policy abolishing free electricity units for power sector employees in Pakistan? बिजली शोबे के मुलाजिमीन के लिए मुफ्त यूनिट्स ख़त्म करने की पॉलिसी किस अदालत ने बरकरार रखी? लाहौर हाई कोर्ट. Which eye condition was diagnosed in बुशरा बीबी before she was shifted back to prison? बुशरा बीबी को दोबारा जेल मुंतकिल करने से पहले आंख की कौन सी बीमारी तशखीस हुई? रेटिनल डिटैचमेंट. Which country signed an agreement with Pakistan to extend the existing $3 billion deposit facility? किस मुल्क ने पाकिस्तान के साथ अपना $3 अरब डिपॉजिट बढ़ाने का मुआहिदा किया? सऊदी अरबिया. What is the length of the first phase of railway restoration launched in 5 districts of KP? खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में रेलवे बहाली के पहले मरहले की लंबाई कितनी है? 62 kilometers. What percentage of seats for women in federal bodies was approved by a Senate committee? सेनेट कमेटी ने वफाकी इदारों में ख़वातीन के लिए कितने फीसद नशिस्तों की मंजूरी दी? 33%. What is the expected travel time of the proposed fast train between Lahore and Rawalpindi? लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान मुजव्वज़ा फास्ट ट्रेन का मुतवक्किल सफरानिया क्या है? 2 hours 15 minutes.
How many electric buses did Punjab's Chief Minister seek to run at tehsil level statewide? پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے تحصیل سطح پر کتنی الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ مانگا؟ 1500. How much money did the Sindh Chief Minister distribute among NGOs assisting differently abled persons? سندھ کے وزیر اعلیٰ نے مختلف صلاحیتوں والے افراد کی مدد کرنے والی NGOs میں کتنی رقم تقسیم کی؟ ₹800 million. To what level did auto financing rise in the latest banking figure for Pakistan overall? تازہ بینکاری اعداد کے مطابق آٹو فائنانسنگ کس سطح تک پہنچی؟ ₹345 billion. By what percentage did textile exports drop in the latest trade update for Pakistan overall? پاکستان میں ٹیکسٹائل برآمدات میں کتنے فیصد کمی ہوئی؟ 7.06%. Which Italian unit will have a dedicated liaison channel with Pakistan's FIA on heritage smuggling? ثقافتی ورثے کی اسمگلنگ پر پاکستان کی FIA کے ساتھ رابطے کے لیے کس اطالوی یونٹ کا چینل بنایا جائے گا؟ کارابینیری TPC. Which NADRA issued document must under 18 candidates obtain under the disputed MDCAT rule before sitting exam? متنازع MDCAT اصول کے تحت 18 سال سے کم امیدواروں کو نادرا کا کون سا دستاویز لینا لازمی ہوگا؟ رجسٹریشن کارڈ. At what age did a prominent lawyer, philosopher and activist رضا کاظم pass away in Pakistan? نامور وکیل اور دانشور رضا کاظم کس عمر میں انتقال کر گئے؟ 96. What did a National Assembly panel seek regarding the high taxes imposed on mobile phones? قومی اسمبلی کے پینل نے موبائل فونز پر عائد بلند ٹیکسوں کے بارے میں کیا مطالبہ کیا؟ ٹیکس ریویو. To what amount did foreign direct investment surge in the latest monthly figures for Pakistan? تازہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کس رقم تک پہنچی؟ $167 million. By what percentage did large-scale industry grow in the first 8 months of fiscal year 26 overall? فسکل ایئر یا مالی سال 2024 کے پہلے 8 مہینوں میں بڑی صنعت میں کتنی فیصد اضافہ ہوا؟ 5.89%. Thank you for watching this video. Stay blessed.